Hello friends, welcome to Vamsi's Golden Series for IAS. This is part 3 of 5 Environment 2017 revision video. Next time move on to third part. Here I want you to understand what is biodiversity. Biodiversity is nothing but variability among living organisms. Whether it is from terrestrial or marine, whether it is any level, genetic diversity or even it could be species diversity or ecosystem diversity, doesn't matter. All sources and all levels, the variability is known as biodiversity. Then what is endemism? So those species which are found nowhere except that region to which they are endemic. That means if a particular species is found only in Western Ghats, you can say that that species is endemic to Western Ghats. Next, you need to know a rough idea about the estimated species on Earth. So the estimated number of species on Earth is approximately 8.7 million. Out of that, around 75% are estimated on land and the rest in ocean. That means more on land compared to ocean. Until now, only 10 to 12% of species are only recorded. Still, many species are yet to be recorded, right? Then we understand various levels of diversity: genetic, species, and ecosystem. Genetic means same species but different genes. Species means different species living in the same area, and ecosystem means the ecosystem itself is different. And measures, there are two ways to measure biodiversity. One is richness, other is evenness. Richness means more number of species means more rich. Evenness means more similarity, means the number, like one species is not dominating the other, then it is more even. So richness again contain alpha, beta and gamma. Alpha means one particular region, beta means comparison between two regions, gamma means overall diversity. Hope you all know this. I am just revising, keep it in mind. And what are services of biodiversity? No need to mug up, common sense se answer karenge. Ecosystem services, biological services and social services are more added. I will explain you with the help of an example. Then we will see threats. Natural causes like climate change, man-made causes like deforestation, habitat destruction, etc. Now take question number 25. Consider the following statements. Statement 1. More than 2/3 of the species that exist on planet are estimated to be in ocean depths. It galat hai because more than 75% are on land. Not here he is saying more on ocean. So first is wrong. Second, more than 80% of species that are estimated on planet were discovered and recorded by the end of 2016. Not 80% बहुत दूर की बात है. 10% भी record नहीं हुआ. So this is also wrong. So both are wrong. Now you have cross check whether he is asking correct statement or incorrect statement. So which of the above statement are correct? He is asking correct. That means both are wrong. So neither one nor two is correct. Next, take question number 26. Biodiversity forms the basis for human existence in the following ways. Soil formation, you see, with the common sense you answer this. Biodiversity का क्या फायदा है? कोई भी पॉजिटिव एक्शन आप देखें, सॉइल फॉर्मेशन, यस, कोई भी नेचुरल एक्शन होता है जो जरूरी है, ये सब बायोडाइवर्सिटी का रोल भी होता है. लाइक सॉइल फॉर्मेशन, प्रिवेंशन ऑफ सॉइल एरोजन, रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट, पॉलिनेशन ऑफ क्रॉप्स, सबको ले सकते हैं. तो 1 2 3 4 इज द आंसर. ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है कॉमन सेंस से आंसर करेंगे. बायोडाइवर्सिटी इज पॉजिटिव थिंग, मींस मोर डाइवर्सिटी मोर गुड. पॉजिटिव मींस पॉजिटिव ऑप्शन आपने देखना. अगर कोई नेगेटिव ऑप्शन दिया तो गलत है. अगर एक्सट्रीमली पॉजिटिव, लाइक द पॉवर्टी ऑफ द एंटायर वर्ल्ड विल बी the whole world will become rich, ऐसा कुछ स्टेटमेंट होता है एक्सट्रीम पॉजिटिव, then we avoid. Otherwise very easy. So 1 2 3 4 all are correct here. Next, I want you to understand biodiversity distribution. Biodiversity decreases with latitude. What does it mean? That means it is more in tropics, less in higher latitudes. If you move from tropics towards the poles, that means if the latitude is increasing, biodiversity decreases. Similarly, biodiversity decreases with altitude. In mountain ranges, if you go to the top of the hill, that means if you go with higher altitudes, then biodiversity decreases. Then mega diverse countries, there are 17 countries recognized as mega diverse country. They have more than 70% of biodiversity. Who recognize these mega diverse countries? Conservation International. What is Conservation International? I will tell you in a while. So what are those countries? Even you can remember very easy if you can imagine the map which I have told you in the main video. USA, Mexico, North and Central America. Then if you come to Colombia, Ecuador, Peru, Venezuela, Brazil.
in South America. If you come to Africa, Democratic Republic of Congo, South Africa, Madagascar. Then come to Asia, China, India, Malaysia, Philippines, Indonesia, Papua New Guinea and Australia in the Pacific. So very easy to remember. Now mega diverse country, India is also a mega diverse country because with just 2.4% of land area, it accounts 7 to 8% of species of the world. So India is part of two realms, Pale Arctic and Indo-Malay, and it has 5 biomes, 10 biogeographic zones and 25 provinces. No need to know the name. Now take question number 17. Consider the following statements. Biodiversity is normally greater in the lower latitudes as compared to the higher latitudes. Yes, biodiversity is greater in lower latitudes. Statement 1 is correct. Statement 2. 17 countries are recognized as mega diverse countries and they account around 70% of Earth's biodiversity. It is also correct. So both 1 and 2 are correct. Now I want you to understand what is biodiversity hotspot. So biodiversity hotspots are recognized where there is species richness and endemism and there is a threat from humans. That means that area has high species richness which are endemic. That means most of them are endemic. That means more efforts to be taken to protect them. And there is a threat from human beings. Then it is better to protect them. Those are identified as biodiverse hotspots. Then who gave this concept? Norman Maier has first given this concept, and 35 hotspots are recognized in the world. Most of them are in tropics and they support more than 60% of world's biodiversity. And in India there are 4: Eastern Himalaya, Indo-Burma, Western Ghats and Sri Lanka, Andaman Nicobar and Sundaland. So important in the world, if you see, Caribbean Islands, Brazil Atlantic Forest, Madagascar, Mediterranean Basin, Eastern Arc and coastal forests of Tanzania, Kenya. And Conservation International give this status. It is the NGO which is recognizing biodiversity hotspots. This is the status given by Conservation International. What is Conservation International? It is an NGO based on Arlington, Virginia, and mega diverse countries भी यही recognize कर रहे हैं, biodiversity hotspots को भी यही recognize कर रहा है, and even it publishes something known as Ocean Health Index. जो जिस कंट्रीज में ओशन है वहां ओशन की हेल्थ, कोरल रीफ्स वगैरह डैमेज हुआ या नहीं, उसकी स्टडी रिपोर्ट भी इट पब्लिशेस. Now see question number 28. Consider the following statements. A biodiversity hotspot is a biogeographic region with significant levels of biodiversity with endemic species and is under threat from humans. Yes, correct. Biodiversity hotspots वे होता है ऐसा रीजन है जिसमें biodiversity बहुत ज्यादा है and that too endemic species ज्यादा है and threat भी है. And the concept of biodiversity hotspots was introduced by IUCN. ये गलत है, IUCN का कोई लेना देना नहीं है. The concept of biodiversity hotspot was introduced by Norman Maier. एक environmentalist है. So second is wrong, first is correct. He is asking which of the above statements are correct. So only one is correct. A is the answer. Now see question number 29. Consider the following statements regarding Conservation International. Statement 1. Conservation International is an organ of the United Nations. Galat hai. It is not an organ of United Nations. It is an NGO. So first is wrong. Second, the Ocean Health Index is published by Conservation International, which is correct. Ocean Health Index is published by Conservation International. So first is wrong. Second is correct. Which of the above statements is correct? 2 only. So B the answer. Now I want you to understand important conventions related to biodiversity. First we will start with Rio Earth Summit, United Nations Convention on Environment and Development. ये रियो में हुआ है, रियो डी जेनेरो 1992 में हुआ है. इस पे 3 documents were distributed. They are Rio Declaration on Environment and Development, Agenda 21, Forest Principles. 3 conventions were signed: Convention on Biodiversity (CBD), UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change), UNCCD (United Nations Convention to Combat Desertification). Rio +5 5 साल के बाद 1997 में Rio +5 हुआ है. That was held in New York. Rio +10 was held in Johannesburg and Rio +20 again was held in Rio. Now this is exactly 25th year. 1992 plus 25, 2017. That's why important. Keep it in mind. Now, Convention on Biodiversity. Hope you are getting. If you are not getting, refer to the main video. So, CBD, Convention on Biodiversity. So, it is signed one of the signatory convention in Rio Earth Summit. So, this main purpose, main goal was conservation of biodiversity, sustainable use, sharing of benefits. Okay? इसके अंडर एक कार्टाजिना प्रोटोकॉल है
to govern the movement of living modified organisms. It came in 2003 and biosafety clearinghouse was made to take care of these things. So to govern the movement of living modified organisms. Then accordingly India में Biological Diversity Act 2002 was passed. So conservation of biological resources and associated knowledge. The main goal was to conserve the biological resources and associated knowledge and access in a sustainable manner and through a process. इसको मॉनिटर करने के लिए नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी को एस्टेब्लिश किया, विच इज एन ऑटोनोमस स्टैट्यूटरी बॉडी. इसका काम है बायोपायरेसी को रोकना है, टू मॉनिटर रिसर्च एंड नो IPR विल बी अलाउड अप्रूव्ड विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ NBA. नगोयो, बाद में नगोयो प्रोटोकॉल आया है, sharing the benefits arising from the utilization of genetic resources in a fair and equitable way was the goal of that. And 2014 में it came into force and इसके लिए बनाया ABS clearing house. Aichi targets was decided in 2010. 2010 was decided as International Year of Biodiversity and 2011 to 20 was taken as International Decade of Biodiversity. And Aichi targets are some targets like in this decade we need to give certain awareness to common people like that. No need to know what are those. But itna yaad rakhe, Aichi targets is a term related to Convention of Biodiversity. Then what is Biofin? Biofin is a global partnership addressing the biodiversity finance challenge. जो इस biodiversity को implement करने के लिए इसका acts वगैरह जो financial requirements है to fulfill that, Biofin came and UNDP will take care of that. Recently इंडिया में भी कुछ finance मिला है, इंडिया में NBA will take care of that. Okay, so इतना mind में रखिए. Now see question number 30. Which of the following has have its origin in Earth Summit? Very basic question. UNFCCC, yes. CBD, yes. Stockholm Convention, wrong. Fourth, UNCCD, yes. So 1, 2, 4 is the answer. Option C. Question number 31. Consider the following statements. 1. Cartagena protocol comes under the Convention of Biological Diversity. Yes, Cartagena and Nagoya come under Biological Diversity Convention. 2. Cartagena protocol is an international agreement which aims at sharing the benefits arising from the utilization of genetic. No, it is not sharing of benefits. Nagoya is sharing of benefits. Cartagena is to govern the movement of living modified organisms. So second is wrong. Third, biodiversity hotspots are identified and declared under Cartagena protocol. You see, biodiversity hotspots is the concept of Conservation International, एक NGO है, इसकी और Cartagena protocol या Convention of Biodiversity की कोई लेना देना नहीं. That means third is also wrong. So which of the above statements are correct? Only one is correct. ये is the answer. Hope you are getting very easy questions. In the exam also you get very easy questions, but you need to have presence of mind. Now see question number 32. Consider the following statements regarding National Biodiversity Authority. Statement 1. National Biodiversity Authority is a statutory autonomous body. Yes, it is a statutory autonomous body. 2. The NBA is established in accordance with the provisions of Section 8 of the Biological Diversity Act 2002. यहाँ broad idea है whether it is made under Biological Diversity Act or not. Whether it is Section 8 or 9 is not important. अगर गलत भी देगा तो वे Biodiversity Act की जगह कुछ और act देगा. Then it will be wrong. Section 8 अगर आपको याद भी नहीं होता है, आप boldly you can mark it because ऐसा silly गलत नहीं देगा, silly mistakes नहीं देगा एग्जाम में. Hope you are understanding. So sections में गलत दे के आपको परेशान नहीं करेगा. अगर सेक्शन तो किसको याद होगा, किसी ने देखा भी नहीं होगा, तब भी हम ब्लाइंडली मार्क करेंगे बिकॉज यह ब्रॉड आइडिया वेदर इट इज पार्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी एक्ट और नॉट इज इंपॉर्टेंट, नॉट वेदर इट इज सेक्शन 8 or 9. गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. सो सेकंड इज आल्सो करेक्ट. सो बोथ आर करेक्ट. Question number 33. Consider the following statements regarding Biofin, which was seen in news recently. It was in news because India got finance through this recently. So statement 1. Biofin is a global partnership addressing the biodiversity finance challenge in a comprehensive manner. Yes, it is correct. It is to address the challenge of biodiversity finance. Statement 2. The United Nations Development Program is implementing this global multi-country project on biodiversity finance initiative from October 2012, which is also correct. यहाँ भी major idea whether it is implemented by UNDP or not, whether it is being implemented from 2012 or 2013 is not important. ऐसा गलत नहीं देगा.
ट्राई टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द यूपीएससी एग्जाम. अगर गलत देगा तो कौन इंप्लीमेंट कर रहा है, दैट इज द मेजर इंपॉर्टेंट थिंग. यूएनडीपी इंप्लीमेंट कर रहा है, ये सही है. अगर मुझे ये नहीं भी पता है वेदर इट इज फ्रॉम अक्टूबर 2012 और नवंबर 2012, मैं ब्लाइंडली इसको टिक मारूंगा बिकॉज ऐसा गलती नहीं देगा, मुझे इतना उम्मीद है. सो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट हियर ऑल्सो. होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ द स्टेटमेंट्स. गलत देगा तो कैसा गलत देगा, गलत देगा तो मेन आइडिया को गलत करेगा, ऐसा नहीं कोई साइड पॉइंट को गलत करके कंफ्यूज नहीं करेगा आपको. गेटिंग मी? आफ्टर दिस आई वांट यू टू अंडरस्टैंड द मोड्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन. So there are two modes, in situ and ex situ. Ex situ means conserving biodiversity outside the areas where they naturally occur. That means we take those species to some other place and we protect them there. Example, botanical garden to protect the plants and zoological garden for animals. In situ means conserving biodiversity in their natural habitat. That means along with the biodiversity, we protect the area also. Generally protected areas. We have national parks, wildlife sanctuaries, biosphere reserve, conservation reserves, community reserves, etc. These are all examples. Now let's understand protected areas. So around 4.9% of geographical area of the country is protected. Out of them 733 total protected areas are there. Out of them 103 are national parks, 537 are wildlife sanctuaries, 67 are conservation reserves and 26 are community reserves. No need to remember this. What is national park? It is made under the Wildlife Protection Act 1972. Central government or state government may declare national park. High degree of protection होता है यहाँ compared to other protected areas. Compared to wildlife sanctuary also, national park में degree of protection ज़्यादा होता है. The alteration of boundaries can be done only on the recommendation of National Board for Wildlife. And highest number of national parks are there in Madhya Pradesh, 9 number. And Andaman Nicobar also 9 number. Then wildlife sanctuary. This is also been made under Wildlife Protection Act 1972. Central government or state government may declare less degree of protection compared to national park. यहाँ grazing like activities are allowed, whereas in national park not allowed. Alteration of boundaries can be done only on the recommendation of National Board for Wildlife. Exactly similar to national park. इतना difference है, national park is more protected compared to wildlife sanctuary. बस इतना mind में रखे. And highest number of wildlife sanctuaries are in Maharashtra, 14 number, and Andaman Nicobar 96 in number. State पूछेगा तो महाराष्ट्र, overall UTI जो भी area पूछेगा तो Andaman Nicobar. Getting me? Now what is biosphere reserve? Biosphere reserve, these are nominated by national government and adhere to minimal set of conditions for inclusion in MAB, Man and Biosphere Program. You will understand, don't worry. So UNESCO has launched this program called Man and Biosphere, MAB. It is an intergovernmental scientific program. That means they give guidance and all. So our country will decide certain areas as biosphere reserves following the conditions required to identify as MAB. Out of them, some will be accepted by UNESCO as MAB, some will not be accepted, they will be left as biosphere reserves without connecting to MAB. Getting what I mean? You will understand, don't worry. इसमें 3 तरीका का चीज होता है. core zone is most protected, generally a national park. Biosphere reserve is not a new allocation. 3-4 नेशनल पार्क्स को 4-5 वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज को इकट्ठे करके एक बायोस्फीयर रिजर्व बनाएगा. जनरली जो मेजर एरिया है, इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड कोर जोन, दैट इज जनरली ए नेशनल पार्क होगा एंड वेयर हाई डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन होता है. द सराउंडिंग एरिया इज नोन एज बफर जोन. यहाँ जो ग्रेजिंग, फिशिंग काइंड ऑफ लिमिटेड एक्टिविटीज विल बी अलाउड एंड उसको भी सराउंडेड एरिया, और जो 2 एरियाज के बीच में ट्रांसिशन एरिया होता है, दैट इज ट्रांसिशन जोन. यहाँ पीपल विल लिव ऑल्सो, दे डू एग्रीकल्चर ऑल्सो, बट दैट एग्रीकल्चर विल बी, इकोनॉमिक एक्टिविटी भी होता है यहाँ, लेकिन नॉट कंट्रोल्ड. ऐसा नहीं आपका मर्जी से क्रॉप वगैरह नहीं कर सकते, थोड़ा कंट्रोल्ड में होगा. ओके, सो कोर जोन इज ऑल बंद, नो एक्टिविटी. बफर जोन ग्रेजिंग काइंड ऑफ एक्टिविटीज आर अलाउड. ट्रांसिशन जोन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर आल्सो अलाउड बट कंट्रोल्ड. Question number 34. Certain areas are declared as national parks and certain areas as wildlife sanctuaries. Consider the following statement regarding the difference between these classifications. Statement 1. National parks are example of ex situ mode of conservation of biodiversity, whereas wildlife sanctuaries are example of in situ mode of conservation of biodiversity. You see, ये गलत है because दोनों example of in situ only.
ex-situ means botanical garden and zoological parks. That is a different story. Both are in situ only, but इसी में degree of protection का फर्क है. That means statement 1 is wrong. Statement 2, the national parks have greater degree of protection compared to wildlife sanctuaries. This is correct. Yes, national parks have greater degree of protection compared to wildlife sanctuaries. So 2 is correct, 1 is wrong. So B is the answer. Now I want you to know where the biosphere reserves are there. Total there are 18 biosphere reserves in India. Out of them 10 are connected to MAB. You understand MAB means it is maintained by UNESCO. ये वर्ल्ड वाइड कनेक्ट होता है. उसमें हमने 18 डिक्लेयर किया हमारा गवर्नमेंट ने. आउट ऑफ देम 10 दे एक्सेप्टेड एंड कनेक्टेड टू MAB. 8 are not connected. Now which 10 are connected? They are Nanda Devi National Park or Nanda Devi Biosphere Reserve in Uttarakhand. मैप के थ्रू याद रखिए. नोक्रेक इन मेघालय, सुंदरबंस इन वेस्ट बंगाल. सेंट्रल इंडिया में आएंगे तो पचमरही इन मध्य प्रदेश, अचनकमार अमरकंटक इन मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, एंड सिमलीपाल इन ओडिशा. होप यू आर गेटिंग वेरी इजी टू रिमेंबर. साउथ में बात करेंगे तो नीलगिरी तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला. एक्चुअली नीलगिरी इज इन तमिलनाडु, बट दिस बायोस्फीयर रिजर्व इज ट्राई जंक्शन, तीनों स्टेट्स का बॉर्डर्स. So it is the first biosphere reserve in fact. Similarly, Agastyamalai, Kerala, it was added to MAB in 2016 only. Recently it was added. Then we have Gulf of Mannar, Tamil Nadu, and we have Great Nicobar, Andaman and Nicobar, Great Nicobar Island. Hope you got it. So total 10 are connected to MAB, and 8 are not connected to MAB. They are Dehang Debang, Arunachal Pradesh, Dibru Saikova, Assam, Manas, Assam, Kanchenjunga, Sikkim. Recently it was taken as India's first mixed site on UNESCO World Heritage List in 2016. हेरिटेज साइट्स दो तरीका का होता है, एक है नेचुरल, दूसरा है कल्चरल. दिस वाज टेकन एज मिक्स्ड, दैट मींस इसमें कल्चर भी है, बुद्धिस्ट कल्चर, एंड नेचुरल भी है. ओके, रिसेंटली इट वाज टेकन इनटू वर्ल्ड हेरिटेज साइट कांचनजंगा. Then we have cold desert, Himachal Pradesh. We have Rann of Kutch, Gujarat. And we have Panna in Madhya Pradesh and Seshachalam in Andhra Pradesh. जहां तिरुपति टेम्पल है, that temple is in these forests, Seshachalam. Now take question number 35. Consider the following statements. Statement 1. Man and Biosphere Reserve is an intergovernmental scientific program of UNESCO that aims to establish a scientific basis for the improvement of relationship between people and their environment. करेक्ट है, इट इज यूनेस्को का है, इंटरगवर्नमेंटल साइंटिफिक प्रोग्राम है. का मतलब इट इज फोकस ऑन मैन एंड बायोस्फीयर. नाम से ही पता लग रहा है ना, दैट मींस एनवायरनमेंट एंड द पीपल. So 1 is correct. 2. In India, 18 sites are connected to Man and Biosphere program. No, 18 biosphere reserves we have identified, but out of them only 10 are connected to MAB, not 18. So 2 is wrong, 1 is correct. So A is the answer. Next, I want you to know all the national parks and their importance. Not all important national parks. Like if you take Jammu and Kashmir, 2 national parks at least you remember. One is Dachigam National Park. Dachigam National Park, Kashmir stag or Hangul. This you find only in this national park, very important. It is known for its variation of altitude, vast variation of altitude. And it is in Jabarwan range. Similarly, you know Hemis National Park. It is the largest national park. Independent individual national park की बात करें, I'm not talking of biosphere reserve, which is a collection of national parks. I'm talking of individual national parks. Out of them, Hemis is the largest, and it is completely into Pale Arctic zone. You know, India is part of 2 zones, Pale Arctic and Indo-Malay. This national park is completely into Pale Arctic zone. It is the only national park in the completely into Pale Arctic zone. And Indus River flows through this, and it is in Janskar range. ये सारे important है. Then come to Himachal Pradesh, Pin Valley National Park. ये स्पीति वैली में है, स्पीति रिवर एंड ऑल, ट्रिब्यूटरी ऑफ सतलुज. एंड धनकर मोनास्ट्री, धनकर मोनास्ट्री इज एग्जैक्टली ऑन द एंट्रेंस ऑफ दिस पिन वैली नेशनल पार्क. देन ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ये यूनेस्को में ऐड हुआ है 2014 में, बट नो नीड टू रिमेंबर, जस्ट नाम याद रखें. ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है हिमाचल प्रदेश में. देन उत्तराखंड की बात करेंगे तो यू रिमेंबर नंदा देवी नेशनल पार्क, इट इज ए बायोस्फीयर रिजर्व आल्सो. Rishi Ganga river flows through this, Rishi Ganga river. Then you have Valley of Flowers National Park in Uttarakhand, and Pushpavati river flows through this. These are small rivers, not very important, just mind में रखिए.
Then you have Jim Corbett. It is very, very important. Jim Corbett is the oldest national park. It is the first national park. And Ram Ganga River, a tributary of Ganga, it flows through this Jim Corbett. ये याद रखें. Jim Corbett is the oldest national park in Uttarakhand. Ram Ganga River flows through this. Then we move on to Uttar Pradesh. कोई इंपॉर्टेंट नहीं, जस्ट नेम याद रखे. दूधवा नेशनल पार्क इज इन उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न यूपी. सिमिलरली यू हैव चंद्रप्रभा इन ईस्टर्न यूपी. देन हरियाणा की बात करें, सुल्तानपुर नेशनल पार्क एंड बर्ड सैंक्चुरी इन हरियाणा नियर गुड़गांव. बस याद रखे इसको. देन सिक्किम की बात करें, कांचनजंगा, ये रिसेंटली वर्ल्ड हेरिटेज साइट में एक्सेप्टेड था एंड थर्ड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड. ओके. देन कम टू अरुणाचल प्रदेश. अरुणाचल में नामदफा नेशनल पार्क, वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज नोन, इट इज इन दफाबम रेंज, मीसमी हिल्स में, एंड पटकाई रेंज, ये दोनों के बीच में है. नोवा दिहांग रिवर इसके थ्रू जाता है. एंड इसमें ऑल 4 मेजर प्रेडेटर्स आपको दिखेगा, लाइक लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, क्लाउडेड लेपर्ड एंड ऑल. सो आल्टीट्यूड वेरिएशंस, all, you know, if you see from the southern side to northern side, huge altitude variation, just like Dachigam. And because of these altitude variations and the position, it has all climates. It has tropical climate also, subtropical climate also, temperate climate also, and even you find here Arctic climate also. If you go to the top, you find cold also. So all varieties of major climates you find in this national park. Then Manipur में याद रखे कीबुल लमजाव नेशनल पार्क. It is inside Loktak Lake. Loktak Lake is into Montreux record, and Sangai deer is a variety. I mean, is important here. This is a species you find only here. Then you have Meghalaya. Meghalaya याद रखे नोक्रेक, गैरो हिल्स में है. Similarly you have Balpakram, ये भी गैरो हिल्स में है. Nokrek and Balpakram from Meghalaya in Garo Hills. Come to Assam. You remember मानस, जिसके थ्रू मानस रिवर जाता है. Then you have काजीरंगा, very important. It is known for rhino population. जो वन हॉर्न राइनो जो इंडिया में है, वे काजीरंगा में हाईएस्ट नंबर यू फाइंड. एंड ब्रह्मपुत्र रिवर भी जाता है इसके थ्रू. धनसिरी, डिफ्लू, ऑल दीज रिवर्स फ्लो इनटू दिस. इनफैक्ट दिस नेशनल पार्क इज सराउंडेड बाय रिवर्स ऑन 4 साइड्स. 2 तरफ में ब्रह्मपुत्र रिवर आएगा, एक तरफ में धनसिरी, एक तरफ में डिफ्लू. दैट्स व्हाई दिस नेशनल पार्क इज नोन फॉर फ्लड्स. वे हर साल इसमें फ्लड्स आता है, बहुत कॉमन है यहाँ. देन यू हैव नमेरी नेशनल पार्क, जिसके थ्रू कमेंग रिवर जाता है. कमेंग इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र विच फ्लोज थ्रू नमेरी नेशनल पार्क. इवन नमेरी रिवर आल्सो फ्लोज थ्रू दिस. इसी को कमेंग नमेरी रिवर को ही कमेंग बोलता है कहीं. देन यू हैव वरांग नेशनल पार्क, इसके थ्रू ब्रह्मपुत्र रिवर जाता है. सो ऑल दीज 4 थोड़ा पाज करके आप देख लीजिए, इंपॉर्टेंट. देन वेस्ट बंगाल, यू रिमेंबर नियोरा वैली नेशनल पार्क. इट इज इन नियोरा वैली एंड नियोरा रिवर फ्लोज थ्रू दिस. वेस्ट बंगाल में है. एंड यू हैव जल्दपारा नेशनल पार्क, जिसके थ्रू टोरसा रिवर जाता है, यह भी वेस्ट बंगाल में है. सुंदरबंस आल्सो इन वेस्ट बंगाल. देन यू हैव भितरकनिका, सेकंड लार्जेस्ट मैंग्रोव है उड़ीसा में. यू हैव सिमलीपाल उड़ीसा में. छत्तीसगढ़ की बात करें, इंद्रावती नेशनल पार्क, जिसके थ्रू इंद्रावती रिवर जाता है. मध्य प्रदेश की बात करें, यू हैव कन्हा, यू हैव बांधवगढ़. इट इज नोन फॉर हाईएस्ट टाइगर पॉपुलेशन, बांधवगढ़. वी हैव पेंच इन मध्य प्रदेश, जिसके थ्रू पेंच रिवर जाता है. एंड वी हैव पन्ना के थ्रू केन रिवर जाता है. यू रिमेंबर दिस बिकॉज इट इज केन बेतवा लिंकिंग भी चल रहा है, तो पन्ना के थ्रू केन रिवर जाता है. मध्य प्रदेश में है ये 4 नेशनल पार्क. देन राजस्थान की बात करें, डेजर्ट नेशनल पार्क जैसलमेर के पास. केलाडियो नेशनल पार्क, भरतपुर. सो केलाडियो नेशनल पार्क इज इनटू मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड आल्सो. It is at the confluence of Gambhir and Banganga rivers. Very important. Kealadio National Park is at the confluence of Gambhir and Banganga rivers. We have one more. It is also into Montreux record. And one more, Ranthambore. It is also at the confluence of Banas and Chambal. Don't get confused. Please take time and understand. Ranthambore is at the confluence of Banas and Chambal. Kealadio is at the confluence of Gambhir and Banganga rivers. देन गुजरात की बात करें, यू रिमेंबर गिर नेशनल पार्क. इट इज नोन फॉर एशियाटिक लाइन्स. इट इज द ओनली प्लेस वेयर यू फाइंड एशियाटिक लाइन्स इन वाइल्ड. कहीं जू में होगा तो अलग बात है. देन कम टू साउथ इंडिया. फर्स्ट विल गो टू कर्नाटका, बंदीपुर नेशनल पार्क.
जिसके थ्रू काबिनी रिवर जाता है. काबिनी इज ट्रिब्यूटरी ऑफ कावेरी रिवर. देन Bannerghatta इज आउटस्कर्ट्स ऑफ Bangalore. बेंगलुरु सिटी का आउटस्कर्ट्स में है, तो दैट्स व्हाई यू कीप दिस आल्सो इन माइंड. दीज टू आर इन कर्नाटका. नाउ वी विल सी इन केरला साइलेंट वैली नेशनल पार्क. इसके थ्रू कुंती पूजा रिवर जाता है एंड इट इज नोन फॉर साइलेंट वैली मूवमेंट. वे आगे आएगा. देन यू हैव एरविकुलम नेशनल पार्क, केरला में है. देन यू हैव पेरियार के थ्रू पेरियार, पंबा और भी बहुत सारे रिवर्स जाता है इसके थ्रू. दीज आर इंपॉर्टेंट. पेरियार इज द लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ केरला. तमिलनाडु की बात करें, यू रिमेंबर मुकुर्ती नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क आल्सो नोन एज टॉप स्लिप. देन अंडमान निकोबार की बात करेंगे, सैडल पीक नेशनल पार्क, बटन आइलैंड नेशनल पार्क, माउंट हैरियट नेशनल पार्क, कैम्पबेल बे इन ग्रेट निकोबार. सैडल पीक इज द हाईएस्ट पीक इन अंडमान निकोबार, 740 मीटर. इफ यू रिमेंबर ज्योग्राफी में पढ़ा है. होप यू अंडरस्टैंड ऑल दीज. नाउ मैराइन नेशनल पार्क्स. देयर आर ओनली 5 मैराइन नेशनल पार्क्स इन इंडिया. दे आर गल्फ ऑफ कच्छ इन गुजरात, मालवन इन महाराष्ट्र, गहिरमाथा इज नथिंग बट भितरकनिका का बीच को ही गहिरमाथा बोलेंगे. सो ओडिशा, गल्फ ऑफ मन्नार इन तमिलनाडु, and we have Mahatma Gandhi in Andaman Nicobar. These are only 5 national parks, marine national parks in India. Remember. Now bird sanctuaries, important bird sanctuaries देखेंगे. नॉर्थ की बात करें, सुल्तानपुर बर्ड सैंक्चुरी, हरियाणा, गुड़गांव के पास, आउटस्कर्ट्स ऑफ गुड़गांव. Then you have Bharatpur bird sanctuary is nothing but Keladiyo National Park, Rajasthan. Then you have Nal Sarovar, Gujarat. Chilka Lake Bird Sanctuary, Odisha, you know Chilka Lake, largest saltwater lake. Mayani, Maharashtra. Salim Ali Bird Sanctuary, याद रखे, you know Chorao Island, जो मंडोवी रिवर में होता है गोवा में, जिसमें मैंग्रोव्स भी है, वहां है ये सलीम अली बर्ड सैंक्चुरी, गोवा. साउथ की बात करें, कौंडिन्या बर्ड सैंक्चुरी इन आंध्र प्रदेश, वेदांतकल बर्ड सैंक्चुरी, इट वाज द फर्स्ट बर्ड सैंक्चुरी, ओल्डेस्ट, ये तमिलनाडु में है. वी हैव रंगनतिट्टू बर्ड सैंक्चुरी इन कर्नाटका. दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज ऑन द Kaveri river. There is a dam on Kaveri river known as Krishnaraj Sagar Dam. Just adjacent to this dam, this Rangantittu bird sanctuary. Then you have Kumarakom bird sanctuary in Kerala. This is on Vemanad Lake. Now see question number 36. Consider the following pairs: national park and region. Bandhavgarh National Park. Bandhavgarh Madhya Pradesh में है. That means Central India and Western India means गलत. Bandipur National Park. Bandipur is in Karnataka, means Southern India, correct. Manas National Park, Manas is in Assam, Northeast India, correct. Which of the above pairs is correctly matched? Yes, 1 is wrong, 2 and 3 are correctly matched. So, B the answer. Very easy questions come in the exam, please understand. 37. Consider the following statements. There are only 5 marine national parks in India. Yes, there are only 5. There is no marine national park in West Bengal. Yes, there is no marine national park. Sundarbans is not a marine national park. Bhitarkanika is there, Maharashtra mein Malwan is there, Gujarat mein Kutch is there, and then you have Gulf of Mannar in Tamil Nadu, and Andaman mein Mahatma Gandhi. So there is no West Bengal में कोई marine national park नहीं है. So second भी correct है, first भी correct है, both are correct. See the answer. But be careful whether he is asking correct or incorrect. यहाँ correct पूछ रहा है, हमेशा एक बार चेक करके मार्क करिए. अदरवाइज है ना, इतना करने के बाद भी गलत हो सकता है. सो आंसर इज सी. क्वेश्चन नंबर 38. कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स: नेशनल पार्क एंड रिवर. जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, रामगंगा रिवर. यस, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के थ्रू रामगंगा रिवर जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिए. सो 1 इज करेक्ट. 2. वरांग नेशनल पार्क. वरांग नेशनल पार्क के थ्रू ब्रह्मपुत्र रिवर जाता है, ये भी करेक्ट है. 3. एरविकुलम नेशनल पार्क, कावेरी रिवर. कावेरी रिवर केरला से जाता ही नहीं है, कावेरी का ट्रिब्यूटरीज जाता है केरला से. कावेरी रिवर डजंट फ्लो इन केरला, ये ज्योग्राफी में पढ़ेंगे. उसका बेसिन आएगी केरला में, बट रिवर इटसेल्फ डज नॉट फ्लो. सो एरविकुलम कावेरी इज रॉन्ग. सो विच ऑफ द अबव आर करेक्टली मैच्ड? 1 and 2 आर करेक्टली मैच्ड, 3 इज रॉन्ग. सी द आंसर. नाउ यू सी, टू आंसर दीज क्वेश्चंस यू नीड टू अंडरस्टैंड द स्पीसीज. आपको मैंने हैंड आउट दिया है, हैंड आउट में बहुत अच्छी लिखा है, आप एक बार रिवाइज करिए. और मैंने क्लास में तो पढ़ा चुका हूं, अदरवाइज आई विल अपलोड दिस वीडियो सेपरेटली बाय नाइट if you want to watch it, if somebody has not understood the species. Otherwise abhi time nahi hai, abhi मैं just I'm answering. Now consider the following.
Bandipur, Manas, Gulf of Mannar, Kanha. Which of the above are tiger reserves? There are about 50 tiger reserves. सारे 50 तो हम याद नहीं रख पाएंगे, लेकिन जब ऐसा क्वेश्चन आता है जरूर उसमें कुछ होता है. फॉर एग्जाम्पल यू सी व्हाट यू नीड टू डू, जो आप जानते हैं, जो आप बिल्कुल नहीं जानते हैं, उसको आइडेंटिफाई करना है. फॉर एग्जाम्पल गल्फ ऑफ मन्नार 3. गल्फ ऑफ मन्नार इज ए मैराइन नेशनल पार्क. मैराइन नेशनल पार्क में टाइगर क्या करेगा? टाइगर क्या करेगी या करेगा, जो भी ग्रामर भूल जाइए. सो थर्ड तो हो ही नहीं सकता. तो इफ यू एलिमिनेट, यू कैन एलिमिनेट एबीसी. सो आंसर इज डी. ऐसा कुछ तो जरूर होता है जब ऐसा क्वेश्चन आता है. यू हैव टू बी केयरफुल. थोड़ा कॉमन सेंस यूज करिए. अदरवाइज इफ यू वांट टू रिमेंबर ऑल टाइगर रिजर्व्स यू कैन रिमेंबर, बट आई पर्सनली डोंट रिकमेंड. इतना टाइम और इतना परेशान होने का कोई जरूरत नहीं. Next 40 question. Consider the following pairs. Bhitarkanika. Yes, Bhitarkanika is known for olive ridley turtles. Well known to you. So one is correct. 2. Gulf of Mannar. Gulf of Mannar is made because of dugong only. Main video में मैंने बताया. So dugong is the flagship mammal of Gulf of Mannar. So correct है. गिर नेशनल पार्क में flagship mammal है, एनिमल है, that is एशियाटिक लाइन. ये जो रेड पांडा नॉर्थ ईस्ट में मिलता है, गिर नेशनल पार्क इज इन गुजरात. सो थर्ड इज रॉन्ग. सो विच ऑफ द अबव इज नॉट करेक्टली मैच्ड? बी केयरफुल, नॉट करेक्टली मैच्ड. सो 1 and 2 आर करेक्टली मैच्ड, 3 इज नॉट करेक्टली मैच्ड. सो सी द आंसर. गेटिंग मी? Consider the following: sea cow, sea lion, sea horse, sea cucumber. These were very much into news recently. That's why I gave this question. Otherwise सारे species आप एक बार रिवाइज करिए. Which of the above is are mammals? Now you see sea cow क्या होता है? Sea cow is nothing but dugong, which is a mammal. Sea lion is also a mammal, and sea horse and sea cucumber are fish. So 1 and 2 are mammals. So ये is the answer. I will upload this video by night if you want. Otherwise refer the handout. Question number 42. Consider the following statements. Smooth coated waters are found in upper Himalayas above 3000 meters. स्मूथ कोटेड वाटर ये होता है, वे जनरली वेटलैंड्स में मिलता है, वेटलैंड्स के आसपास. वे वेटलैंड्स से फिश वगैरह पकड़ के खाता रहता है. तो इट इज फाउंड इन अपर हिमालयस अबव 3000 मीटर. वहां टर्न में क्या करेगी? ये गलत है. फर्स्ट 2 स्मूथ कोटेड वाटर्स आर मम्मल्स. यस, इट इज ए मम्मल. सो सेकंड इज करेक्ट, फर्स्ट इज रॉन्ग. सो विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट? बी. So this is about part 3. If you have any doubt, I will upload the video of species by night. If you want, you watch it. Otherwise, you can refer the handout. Please mention in the comment whether you want that species video or not. If you want, I will upload. Otherwise, I will spend my time on something else.